Now students, this is new chapter class 5 environmental studies. The topic is the air we breathe. This is a chapter for class 5th environmental studies, the air we breathe. Now we will start the lesson. What we will learn in this chapter. इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे. द नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. सबसे पहले हम ब्रीदिंग के प्रोसेस को समझेंगे. जो सांस हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल और एक्सहेल होती है, तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसके बारे में हम समझेंगे. नंबर 1 इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. व्हाट इज मीन्ड बाय breathing? Number 1 concept. Number 2, describe working of the respiratory system. Respiratory system के बारे में हम पढ़ेंगे. Number 3, identify factors that affect respiration. Respiration को क्या क्या चीज़ें affect करती हैं, क्या क्या factors affect कर सकते हैं. Understand how air helps in cooling, heating and in burning a fire. The function of air in cooling, heating and burning a fire. These are some points we will understand in this chapter, the air we breathe. So students, now we continue this chapter. Here is one example. First of all we read. सबसे पहले एक example है जिससे हम read करेंगे और उससे कुछ चीज़ें समझेंगे. Aisha is on an early morning walk with her grandfather in the park. Aisha मॉर्निंग वॉक में अपने ग्रैंडफादर के साथ पार्क में जाती है. शी सीज अ ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द ग्रास टचिंग देयर नोस्ट्रिल्स इन एन अल्टरनेटिंग मैनर. आयशा मॉर्निंग वॉक पे जाती है और बहुत सारे लोगों को देखती है. कुछ लोग ग्रास के ऊपर बैठे होते हैं, कुछ लोग अपने नोस्ट्रिल को इस तरह से टच करते हैं. तो इस तरह से ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये चीज़ें मॉर्निंग वॉक एंड दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प अस इन प्रॉपर रेस्पिरेशन, प्रॉपर ब्रीदिंग. सो दीज आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और इस तरह के योगा करने चाहिए जिससे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो. हर ग्रैंडफादर टेल्स हर दैट दीज पीपल आर डूइंग प्राणायाम, अ टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज. उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि ये जो नोस्ट्रिल पर इस तरह से ये फिंगर को और हैंड्स को टच करते हैं, ये प्राणायाम होता है और एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है. हर ग्रैंडफादर टेल्स हर दैट दीज पीपल्स आर डूइंग प्राणायाम, अ टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आयशा वॉचेस देम एंड लर्न्स टू डू प्राणायाम ऑन हर ओन. आयशा ने भी इस तरह से उसे लर्न किया, सीखा और वह भी अब प्राणायाम करती है. These are very important for our breathing system, respiratory system. Students, now we will understand about process of breathing. What is the process of breathing? The mechanism we will understand here. This is the picture. You can see this is inhalation. The air we inhale and the air we exhale. This is exhalation. Inhale means सांस को अंदर लेना और exhale means सांस को बाहर छोड़ना. The movement of chest when breathing. This is the movement of chest in the process of breathing. Breathing is the process of taking air in and out of the body. What is breathing? Breathing क्या है? Breathing एक process है. Taking air in and out. So taking air in and out of the body is called breathing. The process of taking air in and out of the body, this process is called breathing. We do it through our nose or mouth. ये जो process होता है हम nose और mouth से करते हैं. The action of breathing is called respiration. ये जो ब्रीदिंग का एक्शन होता है इस टर्म को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. द एक्शन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. व्हेन वी ब्रीद इन, ऑक्सीजन एंटर आवर लंग्स. दिस एक्ट इज कॉल्ड इनहेलेशन. In inhalation,
We breathe in oxygen. This act is called inhalation. When we breathe out, carbon dioxide comes out. This act is called exhalation. This is the picture of inhalation and this is the picture of exhalation. Oxygen enters in the body and carbon dioxide moves out. We breathe out carbon dioxide and we breathe in oxygen. So this is the process of respiration. In the respiration, inhalation and exhalation, two processes are involved. When we inhale, our lungs expand, and when we exhale, our lungs contract. Now students, a thin layer of muscle called diaphragm lies between the lungs and the stomach and controls breathing. लंग्स और स्टमक के बीच में एक थिन लेयर होती है, एक मसल होती है जिसे कि हम डायफ्राम कहते हैं और यही हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है. When we inhale, the diaphragm contracts and moves down, making space for the lungs to expand. The opposite happens when we exhale. जब हम इनहेल करते हैं तो जो डायफ्राम है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. When we inhale, the diaphragm contracts and moves down. This is the picture. You can see diaphragm contracts and moves down and making space for the lungs to expand, and the opposite happens when we exhale. Now students, we will understand the term respiratory system. What is respiratory system? The respiratory system is the organ system involved in the process of breathing. Breathing के process में जो भी organs आते हैं वो सभी respiratory system कहलाते हैं. The respiratory system is the organ system involved in the process of breathing. Its major function is to provide oxygen to the body and remove carbon dioxide from it. What is the main function of this respiratory system? Respiratory system का main function क्या है? Provide oxygen to the body and remove carbon dioxide from it. It includes nose, mouth, throat, pharynx, voice box, larynx, windpipe, trachea, bronchi and lungs. So these are the parts involved in the respiratory system. You can see in the picture. Here are all the parts mentioned in this picture. You can see. When we inhale, air enters the body through nose or mouth. जब हम सांस लेते हैं तब एयर हमारे बॉडी में एंटर होती है नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू. Then it travels through the windpipe into two large tubes, the bronchi. One goes into the right lung while the other goes into the left lung. You can see here nostril, then next windpipe. When we inhale, air enters the body through nose or mouth. Then it travels through the windpipe into two large tubes, bronchi. One goes into the right lung and other into the left lung. In the lungs, the bronchi are divided into smaller bronchi which are further divided into bronchioles. Bronchi आगे जाकर के bronchioles में divide होती है. The bronchioles have a tiny air sacs. जो bronchioles होते हैं, bronchioles में छोटे छोटे air sacs होते हैं जिन्हें कि हम alveoli कहते हैं. The bronchioles have tiny air sacs called alveoli where the exchange of oxygen and carbon dioxide take place. यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का exchange होता है. From here, the oxygen is passed into the blood vessels. यहाँ से जो ऑक्सीजन माउथ के थ्रू एंटर होती है ब्लड वेसल्स में जाती है. From here, the oxygen is passed into the blood vessels which is carried to the heart, जो कि हार्ट को जाती है. From the heart,
it is pumped to all parts of the body, और हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स को जाती है. The blood vessels then pick up carbon dioxide. अब इसके बाद जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे आउट करना है. Then the next process, the blood vessels then pick up carbon dioxide and bring back to the heart, from where it is transported back to the lungs and out of the body by exhalation. The bronchioles have tiny air sacs called alveoli, where the exchange of oxygen and carbon dioxide take place. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई में होता है, जो कि टाइनी एयर सैक्स होते हैं. यहां से फ्रॉम हेयर द ऑक्सीजन इज पास्ड इनटू द ब्लड वेसल. ऑक्सीजन ब्लड वेसल में जाएगी और वहां से हार्ट में जाएगी और हार्ट से पंप होकर के सभी बॉडी पार्ट्स में जाएगी. From here, the oxygen is passed into the blood vessel, which is carried to the heart. From the heart, it is pumped to all parts of the body. Now, exhalation. The blood vessel then pick up carbon dioxide and bring back to the heart, from where it is transported back to the lungs and out of the body by exhalation. So, these are the process of respiratory system. And this is called respiration. Now children, you understood the term breathing and respiration very well. Now students, look at here, factors that affect respiration. कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं? एक्सपेरिमेंट 1, इसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट से समझेंगे. नाउ द एक्सपेरिमेंट 1, सिट स्टिल, क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रीथ. इनहेल slowly and exhale slowly. Focus on the breath. Repeat this activity 5 times. Now put your hand a little left from the center of your chest. Can you feel your heartbeat? How is it like? This is the first experiment. The factors that affect respiration. This term we will understand by the experiments. Now the experiment number 2. Slowly get up from your seat and come to an open area. Do jogging at one place. Then do 1 jumping jack. Now do 5 more jumping jacks back to back. Now put your hand on the heart. What do you notice? Is there a difference in your breathing and heartbeat? The heart works like a pump. With each heartbeat, it sends oxygen-rich blood to all parts of the body. With each heartbeat, it sends oxygen-rich blood to all parts of the body. The amount of oxygen that our body needs depends on our physical activity. The amount of oxygen that our body needs depend on our physical activity. जितनी हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतने ही हमें ऑक्सीजन की नीड होगी. अगर हम बहुत स्लोली वर्क करते हैं तो उसमें दौड़ लगाएंगे, जॉगिंग करेंगे तो उसमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है. इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आ गया होगा. When we are resting, जब हम रेस्ट में होते हैं, we need less amount of oxygen, so our heartbeat is slow. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपने इस तरह को फील किया होगा, इस तरह से देखा होगा कि हमारी जो हार्ट बीट है वो स्लो है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो गई क्योंकि हमने ज़्यादा वर्क किया. ज़्यादा वर्क करने से हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है. When we are resting, we need less amount of oxygen, so our heartbeat is slow. When we are running or exercising, our heart beats faster so that our body may get more oxygen. Here is one example by which we understand air helps in cooling, warming and burning. One evening, Aisha saw her grandfather having tea. She noticed that he had poured some tea on the saucer and was blowing on it to cool it down. Suddenly, she felt a dust particle irritating her eye, and the eye started watering. Aisha's grandmother immediately folded her handkerchief
blew on it a few times, and placed it on Aisha's eye. It felt warm and better. Later, while watching television, Aisha noticed a lady was cooking food on a chulha. When she blew on the fire through a pipe, the flames became stronger. Aisha was confused. Grandfather blew air to cool down the tea. Grandmother blew air to warm the handkerchief. And the lady on television blew air to make the fire strong. How can air help in cooling, warming, and also burning? Air helps in cooling, warming, and burning. As our breath is warmer than the outside air, we can use it to warm our hands or also an object such as a handkerchief, just like Aisha's grandmother did. Our breath is also cooler than the hot soup or hot tea, so we can blow on it to cool it down, just like Aisha's grandfather did. Our breath also has a bit of oxygen, and oxygen helps the fire to burn. So, when the lady blew on the sparks of fire, she increased the oxygen supply and flames became stronger. Here is one example. A child is blowing on the hot soup to cool it. This is the example from daily life. Now, here are some points you should know. Number one, nose, mouth, throat, voice box, windpipe, lungs, and bronchi are the organs that are parts of the respiratory system. Number two, inhalation is the process in which we breathe in oxygen that enters our lungs. Number three, in an inactive or resting state, we need less oxygen and our heartbeat is slow. In active or running state or while exercising, we need more oxygen and our heartbeat faster. Next, exhalation is the process of breathing out carbon dioxide that comes out of our lungs. Next, air helps in cooling and warming and also in burning a fire.